वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज आम देखा ऑल इम्पोर्टेंट बॉर्डर पिक्चर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फास्ट आम देखा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु कौन कौन बर कर फास्ट हूँ फेडरल स्ट्रक्चर, देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी पावर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, फेडरल कोर्ट। एतिक मोर होइछि फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, इमरजेंसी पावर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, फेडरल कोर्ट। फेडरल स्ट्रक्चर जदि पचारे ताहले सी हम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, किंतु फेडरल स्कीम आम बर करिछे कनाडाटू। About 75% of the Indian Constitution is based on the Government of India Act 1935. पाखापाखि 75% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बर होइछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन आम देखा यूके, यूनाइटेड किंगडम। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट लाइक क्वीन। क्वीन जमती यूके रे सेमती नॉमिनल हेड होचंदी इंडिया रे प्रेसिडेंट। एटा बर होइछि कोठू ना यूके रु। पार्लियामेंटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी टाइप गवर्नमेंट, बाइकैमेरियल पार्लियामेंट, बाइकैमेरियल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, in center लोकसभा एंड राज्यसभा, that is bicameral. Then lower house more powerful than upper house. Post of PM, cabinet system of ministers, council of ministers responsible to the lower house, that is lower house means Lok Sabha. Parliamentary privilege, speaker of Lok Sabha, single citizenship, prerogative rights, office of Controller Auditor General, legislative procedures, rule of law। एतिकी बर होइछि यूके रु, यूनाइटेड किंगडम रु। आउ थर देखिलमा नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट लाइक क्वीन, पार्लियामेंटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमेरियल पार्लियामेंट, लोअर हाउस मोर पावरफुल देन अपर हाउस, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। पोस्ट ऑफ पीएम, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, पार्लियामेंटरी प्रिविलेज, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सिंगल सिटीजनशिप, प्रीरोगेटिव राइट्स, ऑफिस ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स एंड रूल ऑफ लॉ। देन आम देखा यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स रो देखा फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट, जोड़ा यूएस रे बिल ऑफ राइट्स रूप में जनाशुना। बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बर करिचे यूएस रु आमे। देन सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट जोड़ा आमे बर करथिले कोठू ना यूके रु, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट लाइक क्वीन यूके रु बर करथिले। किंतु एग्जीक्यूटिव हेड कथा जदि पचारे, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट एटा आमे बर करिचे यूएस रु। देन प्रेसिडेंट एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 डील्स विथ दैट। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट हो किंबा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस हुंतु, दुईटा जाक बर करछे आमे यूएस रु। Then independence of judiciary and separation of power among the three branches of government. Independent judiciary, independent three branches of government to like three branches of government, executive, judiciary and legislature, three branches of government.
एमिति भी आम कहीपर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू। देन वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अफेयर हाउस। राज्यसभा एक्स ऑफिसो चेयरमैन होचंती वाइस प्रेसिडेंट। देन आइडिया ऑफ प्रिएम्बल। देन इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, इलेक्टोरल कॉलेज जहाँ माध्यम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब इलेक्टेड होती इलेक्टोरल कॉलेज माध्यम फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को फंक्शन ये पर होइछि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रू। आउ थे देखि ना फंडामेंटल राइट्स दैट इज बिल ऑफ राइट्स इन यूएस। सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, impeachment of president, removal of Supreme Court and High Court judges, independent of judiciary and separation of power among the three branches of government, judicial review, vice president as the ex officio chairman of Rajya Sabha, idea of preamble, equal protection under law, provision of states, electoral college, function of president and vice president. Then आम जा कनाडा। फ्रॉम कनाडा स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्टार्टिंग रू मु कही जदि जदि फेडरल स्ट्रक्चर आसे ताहले कहबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, किंतु फेडरल स्कीम जदि आसे विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर ताहले कहबे कनाडा। देखो स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड प्लेसिंग रेसिजुअरी पावर विथ सेंटर। रेसिजुअरी पावर का सहित ना सेंटर सहित रेसिजुअरी पावर। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143। देन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया पुणी कनाडा थोड़े देखी दवा स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एंड प्लेसिंग रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर विथ द सेंटर। रेसिडुअरी पावर का सहित अच्छी ना सेंटर सहित अच्छी। देन हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, स्टेट गवर्नर मानकर अपॉइंटमेंट सेंटर द्वारा हुए। देन हूँ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बर हो कनाडार। देन देखा ऑस्ट्रेलिया। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फ्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, concurrent list, language of preamble, joint section of 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये चार्टा बर हो ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट concurrent list, joint section of 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, both are most important. Freedom of trade and commerce, concurrent list, language of preamble and joint section of 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देन आम देखा फ्रॉम आयरलैंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपोर्टेंट। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड टू बर कर किंतु आयरलैंड इटा ओरिजिनली बर कर स्पेन रु। तो स्पेन रु आयरलैंड बर करके आनी, आयरलैंड टू आम बर कर आनी। तो ये ओरिजिनली हूँ डीपीएसपी कार ना स्पेन रो। देन हूँ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बर कर ना आयरलैंड। देन हूँ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा को 12 जन मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत करती, से प्रोसेस को आम आयरलैंड बर कर आनीचे। देन आसला साउथ अफ्रीका। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट आम बर कर ना साउथ अफ्रीका। 2/3 ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी दरकार। यहाँ कौड़ बर हो ना साउथ अफ्रीका। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा 238। जदि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कथा पचारे 12 मेंबर नॉमिनेटेड कथा पचारे ताहले सी हम आयरलैंड। 12 जन मेंबर को जो राष्ट्रपति मनोनीत करती राज्यसभा को, दैट इज आम बर कर आयरलैंड टू।
जदि इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा पचारे 238 250 टोटल स्टैंड 238 इलेक्टेड 12 नॉमिनेटेड तो 238 होची बर करछे आम साउथ अफ्रीका रो इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। देन आम आगो जीवा फ्रॉम वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी मोस्ट इम्पोर्टेंट बर करिछे फिक्चर जर्मनी टू ना कौन ना सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम रे फंडामेंटल टाइम रो उच्छेद फंडामेंटल राइट्स रो उच्छेद जर्मनी रो बर करछे जोटा आर्टिकल 358 रे अछि। देन हम देखिबा फ्रॉम यूएसएसआर रूसिया टू फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्सेप्ट ऑफ 5 year प्लान आइडिया ऑफ जस्टिस दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रीएम्बल तीन बर करछे मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन आसला फ्रॉम फ्रेंच रू कौन बर करछे कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन प्रीएम्बल। देन देखिबा जापान रू कौन बर करछे ला ऑन व्हिच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर बाय ला एतिके आम बर करछे जापान टू ऑल इम्पोर्टेंट फीचर्स थिला बरड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज एतिक ही फ्रेंड्स पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।